Hello students, you are watching SNS World YouTube channel. I am Satyanarayana Saha. Today I am going to teach about what I left in past video. Already I uploaded past video in this topic. This topic's name is Salient Features of the Indian Constitution. Here you learn about citizenship, adult franchise and fundamental rights. Today I am going to start from writ. A writ is a formal written order issued by the Supreme Court and the High Courts to provide legal remedies to individuals who don't obtain adequate protection under ordinary laws. writ क्या है? वो एक फॉर्मल रिटन ऑर्डर है. उसको कौन इशू करता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट. इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड लीगल रेमेडीज टू इंडिविजुअल्स हु डोंट ऑब्टेन एडुकेट प्रोटेक्शन, जिसका प्रोटेक्शन नहीं मिलता है, ये प्रोटेक्शन देता है. अंडर ऑर्डिनरी लॉज एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, issuance of writs, making of laws by the parliament and suspension of this right under very special circumstances have all been taken care under different clause of Article 32. The most important writs are given below. What are the important writs? First one is habeas corpus. It means to have the body. By issuing such a writ, the High Court of the Supreme Court can get the body of any person released if it has been unlawfully detained by any person or group of persons or by the state. This writ is thus great safeguard for the personal freedom of a citizen. कोई व्यक्ति को अगर अनलॉफुली डिटेन किया गया है, उसको छोड़ना पड़ेगा. यह है ये रिट का benefit. Then second, mandamus in Latin, it means we order. It is a command or an order from a superior court to a lower or an administrative authority to perform a certain duty. Mandamus ये इशू किया जाता है superior court to lower. क्यों? Administrative authority to perform a certain duty, एक ड्यूटी के लिए. Writ of prohibition. The writ of prohibition is an order issued by a superior court to a lower court to stop proceeding. यह stop proceeding के लिए इशू किया जाता है in a case which might be in excess of the jurisdiction of the lower court. Then writ of certiorari. This writ is issued by a superior court to judicial authority desiring to be informed of what is going on. क्या चल रहा है? Though it appears similar to the writ of prohibition, there is a difference. Writ of prohibition is issued when certain proceedings are going on. जब कुछ proceeding चल रहा है, उस समय ये issue होता है. The writ of certiorari is issued after the order has already been passed by the lower courts. और एक है co warranto. It means by what order? It is issued when a person has usurped any office. This writ thus prevents public officers from forcibly or wrongly holding a high public office. अगर high public office को वो wrongly use कर रहा है, तो ये order issue किया जाएगा. The writ make the right to constitutional remedies. The most important and also make it an effective tool for their enforcement. Though presently only the Supreme Court and the High Courts have the power to issue these writs, the Parliament can confer similar powers on other courts. Writs issue करने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट चाहिए. ये एक चार्ट दिया गया है, फंडामेंटल राइट्स एट ए ग्लैंस. ये याद रखने का बहुत इजी होगा. जैसे राइट टू इक्वलिटी है 14 से 18 तक. आर्टिकल 14 में क्या है
इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यह है आर्टिकल 14। आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट में है आर्टिकल 15। देन 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यह है अपॉर्चुनिटी के लिए। एंड आर्टिकल 17 अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 18 अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। यहाँ पर ये कीवर्ड को याद रखना है, जैसा इक्वालिटी फॉर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, देन प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट, अनटचेबिलिटी, टाइटल्स, ये कीवर्ड सब याद रख देने से राइट टू इक्वालिटी हो गया। और राइट टू इक्वालिटी अगर शॉर्ट नोट्स में ये आर्टिकल 14 से 18 लिखना है। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक। आर्टिकल 19 में क्या है, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली, मूवमेंट, सेटलमेंट, प्रोफेशन, ये सब आता है अंडर आर्टिकल 19। आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। आर्टिकल 21 क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी। आर्टिकल 22 क्या है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। तो राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से 22, इसको याद रखने से राइट टू फ्रीडम फिनिश। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ये दो तो है आर्टिकल 23 एंड 24। दिस आर्टिकल गोइंग अंडर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। आर्टिकल 23 क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 14 इन फैक्ट्रीज, माइंस एक्सेट्रा, यह है आर्टिकल 23। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन इसका अंडर में आता है 25, 26, 27, 28, चारों आर्टिकल। आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, प्रोफेशन, प्रीचिंग एंड प्रोपगेशन। आर्टिकल 26 है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। आर्टिकल 27 फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रोमोटिंग पर्टिकुलर रिलीजन। आर्टिकल 28 फ्रीडम फ्रॉम अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, इसमें दो आर्टिकल है, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। आर्टिकल 29 क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज, इसका प्रोटेक्शन चाहिए। आर्टिकल 30 में राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर माइनॉरिटी एजुकेशनल, सोशल एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशंस। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यह है आर्टिकल 32, इशू ऑफ रिट्स, अभी जो समझाए, हाबियस कॉर्प्स, मैंडामस, प्रोहिबिशन, सेरिटोराई और को वारंटो, ये है रिट्स। हाबियस कॉर्प्स, मैंडामस, प्रोहिबिशन, सेरिटोराई, को वारंटो, ये 5 रिट्स है। राइट टू एजुकेशन, ये आर्टिकल 21A में दिया गया है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 6 एंड 14 ईयर्स। ये आसानी से याद रहेगा, जो आर्टिकल 21A वो बेस है राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन, दिस राइट हैज बीन गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 86 अमेंडमेंट एक्ट। कब हुआ था, 2002 में। बाय दिस एक्ट a new article 21A has been inserted in the constitution, which states the state shall provide free and compulsory education to all children of the age of 6 to 14 years in such manner as the state may by law determine. Right to education कब insert हुआ, 86 amendment। 86 amendment कब हुआ था, 2002 में। वहां पर एक न्यू आर्टिकल 21A इंसर्ट किया गया था। राइट टू प्रॉपर्टी जो डिलीटेड किया गया है, आर्टिकल 31 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैड अर्लियर एम्पावर्ड द सिटीजन ऑफ इंडिया टू परचेज, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ मूवेबल
as well as immovable property as a fundamental right. However, in keeping with the socialist philosophy of the Constitution, the right to property was deleted from the list of fundamental rights by the 44th Amendment Act in 1978. This amendment made the right to property Article 300A a legal right. Check on arbitrary action of the state. The fundamental rights secured to the individual are in the nature of limitation or restrictions on the arbitrary actions of the state. Article 13(2) declares that all laws and executive orders in force immediately before the commencement of the Constitution, inconsistent with the fundamental rights, are void to the extent of such inconsistency. This article thus provides for judicial review in India. However, the Constitution has empowered the state to make valid exceptions to the right on the grounds such as security of the state, public order, public morality, etc. यहाँ पर आर्टिकल 13(2) क्या है उसको याद रखना है. देन रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड. क्या रेस्ट्रिक्शन इम्पोज किया गया था? फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट. Reasonable restrictions can be imposed on them because of the general welfare of the society. कभी कभी fundamental rights पर भी limitation आ जाता है. The fundamental rights can be suspended when the president declares state emergency in the country in case of war, external aggression or armed rebellion. इसी क्षेत्र में fundamental rights suspend हो जाता है. Such a suspension of rights is temporary, but सस्पेंशन वो टेम्पररी रहता है, अस्थायी रहता है, परमानेंट नहीं. एज सुन एज द इमरजेंसी इज ओवर द राइट्स आर रिस्टोर. फिर राइट्स चला आता है. फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट एंड द नेशनल इंटरेस्ट, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन द fundamental rights can be imposed. Parliament has the power to modify the application of fundamental rights to the members of the armed forces, police force or intelligence organizations so as to ensure proper discharge of their duties. There are some laws which restrict the use of these rights in public interest. Also where the Maintenance of Internal Security Act, Defense of India Rules, Preventive Detention Act, the National Security Act 1980 NSA, Essential Service Maintenance Act, etc. are made to safeguard the interest of the nation, but they curtail the use of fundamental rights. Suspension of fundamental rights. The fundamental rights guaranteed by the Constitution यहाँ पर दिया गया है, इसको याद रखना है. Fundamental rights किसका द्वारा गारंटी दिया गया है? Constitution. Remain suspended while a proclamation of emergency is made by the President under Article 352. As soon as a proclamation of such an emergency is made, the legislature is free to make any law. इस समय legislature any law बना सकता है and the executive has the liberty to take any action, even though it restricts the right to freedom of speech and expression, assembly, association, movement, residence, profession and occupation. These restrictions remain in effect only as long as the emergency is in operation. When a proclamation of emergency is in operation, जब emergency चलता है, the president may by order declare that the right to move a court for the enforcement of the fundamental rights shall remain suspended. उस समय आदमी लोग का fundamental rights suspend किया जाता है. In case of such situation, the Supreme Court and the High Court shall be powerless to issue the writs or to make any other order for the enforcement of the fundamental rights. उसी तरह fundamental duties भी रहता है, जैसे duties and rights go hand in hand. There be no rights in a society where there are no duties. For example, if we have a right to life, it is our duty to respect others' life and not injure another person. Similarly, the right to freedom implies that we have to maintain self-restraint and accord similar rights to others which we want for ourselves. जिस तरह rights
दिया गया है उस तरह ड्यूटी को निभाना है। राइट एंड ड्यूटीज गो साइड बाय साइड। यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज सब चार्ट कर समझा दिया गया है। इसको देखने से इजी से याद रहेगा। टू अवॉइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। हम कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम को रेस्पेक्ट देंगे। टू फॉलो द नोबल आइडियल्स। To uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India, इसको हम सुरक्षा करेंगे। To defend the country and to render national service, to promote harmony and brotherhood, to preserve rich cultural heritage, to protect natural environment, to develop scientific temper, humanism and spirit of inquiry, to safeguard public property and abjure violence, to strive for excellence. Duty of the parent guardian to provide education to his child 6 to 14 years of age. Kinds of duties. Fundamental duties were added to the Constitution by 42nd Amendment Act. कब हुआ था? 1976 में, and inserted Part 4 of the Constitution. Fundamental duties कौन part में है? Part 4 of the Constitution. The Article 51A of the Constitution states the following 10 duties of a citizen. यह है 51A का अंडर में। To abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the national flag and national anthem. Constitution, national flag, national anthem को respect देना होगा। To cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom. To uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India. देश को झुकने के लिए देना नहीं चाहिए। सोवरेंटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ये प्रोटेक्ट करना चाहिए। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगेस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटीज। टू रेनाउंस प्रैक्टिसेस derogatory to the dignity of women. डिग्निटी ऑफ वुमेन को भी बजाय रखना है। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट। क्या है? इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी को डेवलप करना है। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू अब्जर्व वायलेंस। टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटीज सो दैट द नेशन constantly rises to higher levels of endeavor and achievement. It is the duty of parent or guardian to provide opportunities for education to his child, or as the case may be, ward between the age of 6 and 14 years. The clause K was added by the Constitution. कब? 86 Amendment Act 2002 में। Importance of fundamental duties. क्या importance है? To make citizen aware of their social and economic obligations, to warn them to do and not to do certain things in the interest of their country, fellow citizens and themselves, to protect and awaken the people to their cultural heritage, to tame unruly elements in society, to strengthen national harmony as the steer of patriotism. Patriotism को क्रिएट करना है। यही सब था फंडामेंटल ड्यूटीज। और यहाँ पर टर्म्स टू रिमेंबर भी दिया गया है। यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसा दिया गया है जिसको पढ़कर तुम लोग आसानी से याद कर सकते हो, जैसा सिटीजनशिप, द राइट ऑफ ए पर्सन टू बी लीगली रिकॉग्नाइज्ड एज ए मेंबर ऑफ द कंट्री। अडल्ट फ्रेंचाइज क्या है? द राइट टू वोट गिवन टू पर्सन ऑफ 18 ईयर ऑफ एज एंड अबव, irrespective of caste, color, creed, qualification, etc. Civil liberties क्या है? Freedom of ordinary citizens. Constitutional amendment क्या है? जो change, modification और additional to the constitution. Conviction क्या है? An instance of having committed a criminal offense. Covenant, a formal agreement. Communal riots, riots resulting from friction between two or more communities, जो झगड़ा आता है।
exploitation taking unfair advantage of someone, justiciable able to be shown right or reasonable by the judiciary. Minorities, the relatively smaller groups of people. Reservation and arrangement whereby something reserved, for example reservation of post for other backward castes. Suit, a lawsuit containing a set of complaints for legal judgment. ये था इस टॉपिक का सारांश. I hope you understood well and go through the books once again and keep in mind what are essential for you. Thank you.